Good Hi, morning. good Good morning. Good morning, morning. Good everyone. morning, Good ma'am. morning. Good Morning, morning, ma'am. ma'am. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, Very ma'am. good morning. Good morning. Good Good morning. morning, Good morning, everyone. everyone. Good Good morning. morning. Good Very good morning, morning. Prachi. Very good morning. And welcome, everyone. Good And thank you for joining in on the Zoom call and on the YouTube. And thank you so much for giving it so much love and appreciation to the channel and improving your lives, because improving your lives is the real intent behind studying together. And anyhow, studying books, I think, is the best thing. I've always said for the longest time that books are my best friends, because you can literally rely on them at any point of time. You want direction, books are there. They educate us, they make us learn, they show us the pathways, they show us how to live life, etc., etc. So make books your best friend. So we are anyhow reading 2 books. और दूसरी वाली तो हम पता नहीं बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, और वो हम पढ़ते रहेंगे, no matter how complex it is. If we could study breaking the habit of being ourselves, we can actually study anything now. We will be able to understand anything, because ये toughest book to crack है अगर हम देखें बुक्स पढ़ने की सीरीज में. और अगर ये पढ़ के हमने इसको, इसकी आइडियोलॉजीज, इसकी टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में like we have been practicing them, और उसकी वजह से we are definitely seeing a lot of difference. तो अब हम कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं, है ना. सो बहुत अच्छी आदत होती है किताबें पढ़ना. एंड and then the intent is that अपने आप आपकी लाइफ में वो पॉलिशिंग होती जाएगी when you are so much into studying the books. So thank you so much, all of you who are participative in taking this mission forward of reading books, spreading happiness, spreading knowledge, spreading awareness, changing lives bit by bit, changing the personality. It is not a very easy thing to do, because actually हम इतने सारे जन्मों से अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी सेम होती है, चेंज नहीं हो रही होती है. वो कर्मास हम कैरी कर रहे होते हैं तब से लेके अभी तक, और वो इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने उसके बारे में अवेयरनेस जान के कि किस तरह से ये करते हैं, and by putting them into practice. So that's absolutely beautiful. Even I'm seeing lots of evidences, like sometimes they become so good to be too good to be real, because something happens and then it doesn't even bother me. Whereas it would be the same thing जो मैं जिसमें बहुत overreact करती थी पहले, और अभी वो literally bother भी नहीं करता. It's not that मुझे अपने emotions suppress करने पड़ते हैं, but it does not even affect at all, zero. Like it just comes and goes. It is just like it is a stone kept there and I have nothing to do with it. It is like that. I just say thank you and I move on. I just say thank you and I move on. So without even getting my emotions attached or entangled into it. है ना, जैसे जो डिस्पेंसर बताते हैं कि अपने इमोशंस को बिना बात के किसी भी चीज से एंटैंगलमेंट मत किया करो, मत किया करो, बिकॉज इमोशंस एंटैंगल हो जाते हैं तो वो दिक्कत आने लग जाती है. सो इमोशनल लेवल पे चीजें होने ही मत दो, है ना. वाई टू इन्वेस्ट नेगेटिव इमोशंस इनटू इट. सो वी आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग दैट. और आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैजिक बुक पे, मैजिक चेक. सो मैजिक चेक इज पैसे रियलाइज करने के लिए, है ना. अगर किसी चीज, कोई चीज चाहिए आपको अपनी लाइफ में और बहुत बैडली चाहिए, आपको लग रहा है नहीं बस ये होना ही चाहिए, या आपको अपने घर की डाउन पेमेंट करनी है लेकिन आपके पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, या कोई चीज खरीदनी है, कोई बहुत लग्जरी सा बैग खरीदना है, आपको लग रहा है दैट अनअफोर्डेबल है, या थोड़ा सा मेरी पॉकेट पे स्ट्रेन पड़ेगा अगर मैं खरीदूंगी, या फिर आपको कोई कोर्स खरीदना है, या फिर आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि like why to ask for money, let me just create it and then magic check. That is the practice we need to do for that. किसी चीज के लिए मैजिक चेक सिर्फ पैसे लेने के लिए, पैसे से जो चीज आपको चाहिए, जो कमोडिटी हो सकती है, वेकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज चाहिए, वो मैजिक चेक होता है. ठीक है. सो आज और मैजिक चेक मनी फ्रीक्वेंसी जो होती है अब ये आपकी बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज हम लोग मेडिटेशन जर्नी में भी है ना साथ साथ. वी गेट इनटू दैट थॉटलेस जोन्स multiple times during the day. So when you go into that silence thoughtless mode multiple times during the day, your frequency naturally starts getting elevated. मतलब अगर आपने 5 मिनट भी सुबह बैठ के डीप ब्रीदिंग की है और अपने माइंड को बिल्कुल थॉटलेस किया है, आपकी पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी अगर हम मेजर करेंगे एनसेफेलोमीटर ग्राफ से, सो उसमें हमको पता लग जाएगा कि आपने आज सुबह यू हैव मेडिटेटेड फॉर 5 मिनट्स. इतनी ज्यादा पावरफुल होता है ये.
सो इस तरह से और पूरे दिन आप सोचो हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, जबकि आपने एक्चुअली थॉटलेसनेस बैठ के आपने बस ब्रीदिंग की थी 5 मिनट के लिए बैठ के, बट उसका इफेक्ट इज कैरीड फॉर द नेक्स्ट 24 hours. How wonderful, no? And this is how, and especially when you wake up in gratitude in the morning and you sleep in gratitude at night. रात में आप थैंक यू बोल के सोते हो बहुत सारी चीजों को, और सुबह भी आप उठे हो, तो दोनों टाइम जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल मोड में था, अवेक था, उस वक्त आपने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उसमें सैचुरेट किया, सुबह भी किया और रात को भी किया। और उसके अलावा आपने 5 मिनट साइलेंट सिटिंग किया, मेडिटेटिव सिटिंग किया, या डीप ब्रीदिंग किया सिर्फ, तब उसकी वजह से आप नेचुरली आपका बीइंग क्वांटम लेवल पे चेंज होने लग जाएगा। और क्वांटम लेवल पे जब चेंज होती है कोई भी चीज, तो इसका मतलब है दैट आपकी बॉडी धीरे धीरे मेजरली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में रहेगी। इसका मतलब है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में रहेगी, है ना, ऑटोनॉमिक मोड में नहीं होगी। ऑटोनॉमिक मोड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत टेंशन होती है। आपका वाइब्रेशन, अगर हम आपकी वाइब और आपका ऑरा को चेक करें तो बहुत श्रंकिन होता है, बहुत श्रंकिन होता है, कम छोटा ऑरा होता है। और जैसे जैसे आप सिर्फ 5 मिनट, और शाम को आपको लगा तो फिर से आप 1 मिनट के लिए आपने सोचा कि अच्छा दिमाग खाली करो, जस्ट सिट एंड ब्रीथ। सो उसकी वजह से यू विल सी दैट आपका बीइंग, आपका क्वांटम मतलब आपका जो एटॉमिक लेवल है बॉडी में, जो सबसे सूक्ष्म लेवल है, वहां से आपके बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाएंगे, है ना। अब पहले आप बार बार बीमार पड़ते थे, अब आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। सो इट इज कॉल्ड न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसको बोलते हैं, साइंस का नाम है। बाय द वे, मैं आप सबको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि अभी कोई रिसेंटली दोबारा बोल रहा था, पहले भी इन्होंने बोला था, तो बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मैजिक बुक के सेशंस होते हैं, अलग 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 चैनल्स पे भी स्ट्रीम होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स भी हैं। तो बोल रहे थे कि एक एक दीप्ति मैम का सेशन होता है जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल लोग भरे रहते हैं। जो इंटेलेक्चुअल होता है वो वहीं जाता है, उनको और किसी की बातें नहीं समझ में आती है। तो आई थिंक ये सबके लिए कॉम्प्लीमेंट है। अब किसी ने क्या सोच के ये बोला, और ये शायद दूसरी बार बोला है, आप में से ही किसी को एक बार बोला था तो आपने मुझे बताया था ये वाली बात, तो ये दूसरी बार बोला और कहा है कि नहीं, बहुत इंटेलेक्चुअल सेशंस होते हैं, और उनके सेशंस में वही जा सकते हैं जिनको, हु आर सीकिंग साइंस, हु आर सीकिंग नॉलेज, हु अंडरस्टैंड एंड दे इम्प्लीमेंट। सो हाउ कूल इज दैट। सो चलो, ये वाला सबको, आप सबको एक बैज ऑफ ऑनर मिल गया कि आप इंटेलेक्चुअल हो, इसीलिए आप यहाँ पर हो, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते, है ना। शायद इसलिए बोला है क्योंकि मैं बहुत साइंस के साथ में कोई भी चीज बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के ये करो, तो मैं उसकी साइंस समझाती हूँ, शायद इस वजह से होगा। तो इसीलिए जब मैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि नहीं, साइंस तो पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से होता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये बहुत लार्जर देन लाइफ, ऐसे ही सरियल और लाइक कोई टोना टोटका और उस तरह की चीजें। नो, एवरीथिंग हैज गॉट अ रीजन। सो आई लव डिकोडिंग द साइंस बिहाइंड इट, विच इज सो ब्यूटिफुल। और प्रिया, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, रीता जी ने मुझे बैंकॉक से फोन करके बोला कि आप मेरी रेप्लिका हो, और कहते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब प्रिया बोलती हैं कि दीप्ति स्पीकिंग, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस एंड देयर इज जस्ट नो डिफरेंस दैट वी कैन मेक आउट। सो Oh, ma'am, that's huge, huge, दैट huge. इज फॉर, सो शी Thank you सेड so दैट much. वो बिल्कुल ऐसे कि आपकी जैसे शैडो होती है ना पर्सनैलिटी से, मिलकर शैडो नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है अपने आप में। सो Thank you, ma'am. Thank you. इंडिविजुअल, It's इंडिविजुअल all लाइक, But because of you. Everything is because Dipti, of you, ma'am. यस। yeah, Thank you. Dipti, I think it's because of you. I said your blessings are, so much on her. Yeah, These were my of course. wordings to you. And of course, Priya, you are also, I mean, what Dipti said, I told her, but definitely the whole credit goes to Dipti. अरे Of course, of ये course. अपने Thank आप में ही बहुत पावरफुल है।
Thank Thank you. you so Thank you, much, ma'am. Dipti. Thank you She so much. carries a lot on her shoulders when it comes to do with this. So thank you Mm. firstly for so many people who called and said that everybody in this group is super intellectual. Yes, they are. This is one compliment I will take very, very gracefully, that everybody is understanding the science behind what they do so that it does not look like a blind faith, like क्यों करें ऐसे blind faith कि ठीक है ऐसे बोल दिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. Yes, everybody here is intellectual and thank you for so many compliments by so many people repeatedly telling us. ये 2 साल पहले भी किसी ने बोला था, ये पिछले साल भी सुनने में बहुत आया था कि सारे इंटेलेक्चुअल, सब बहुत सारे मैजिक बुक के सेशंस इंटेलेक्चुअल उन्हीं के सेशंस में भरे रहते हैं और उनको बार बार सुनते हैं. सो थैंक यू फॉर इट. I think it is only to do with the scientific evidences जो मैं देती रहती हूँ because मेरा subject ही ऐसा है that way. So maybe this is the reason, but yes, thank you so much. So this is about the magic check. Now magic check अगर हम में से किसी का जल्दी जल्दी realize नहीं हो रहा है ना, if it is not happening very fast, I mean magic check has to realize very fast. If it is not realizing very fast, that means we are going in the low energy zone. Low energy zone. ओके, दैट मीन्स हम दिन में मोस्टली लो एनर्जी, जैसे रोंडा बर्न ने पावर बुक में बताया था कि कम से कम 50%, 51% ऑफ द डे यू हैव टू बी इन द गुड फीलिंग एनर्जी, गुड फीलिंग थॉट एंड अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव, है ना. तो अब ये रियलिटी चेक है हमारे लिए दैट इफ 51% मीन्स, अगर बैलेंस जो होता है, क्या तराजू बोलते हैं जिसको, बैलेंस, तो उसमें 2 वो होते हैं ना, प्लेट्स रखे हुए होते हैं दोनों साइड पे. तो अगर ऑब्वियसली उस वाली जिस चैप्टर में उन्होंने ये 51% का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें उन्होंने देयर वाज एन इलस्ट्रेशन विद अ बैलेंस एंड इट सेड दैट the one balance has to be slightly lower than the other. That means वो 51% होगा तो वो तराजू अपने आप नीचे आ जाएगा. That means day आपका gravitate होगा towards more of gratitude and high positive energy. So we have to actually measure because अगर magic check realize नहीं हो रहा है जल्दी, इसका मतलब है energy match नहीं हो रही है ना. सो इस बार हम कोशिश करेंगे because today's chapter is magic check. So this time we will work on it. Let's just work on it and have a tarazu, like more towards the gratitude side and make it a little more heavier by putting more weight there. And we have to work at it. Okay, we may need to work at it for a series of 1 month, maybe 2 months, but let's work on it. Let's work on the word change that we have learned in the other book. जैसे नेगेटिव वो वैसे चेंज करके उसका पॉजिटिव इम्प्लांट करना और मल्टीपल रैम्पेजेस करना एक दिन में, उस वजह से भी एनर्जी हाई होने लग जाती है. मल्टीपल रैम्पेजेस मतलब 1 मिनट के लिए लगातार आप अप्रिशिएटिव मोड में रहो, है ना. जैसे कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज हो रही है, जब भी आप जैसे वॉक कर रहे हो, सो बी इन दैट अप्रिशिएटिव मोड एट अ स्ट्रेच. उसके बाद आफ्टर 1 hour 2 hours again, you're sitting idle and your mind is wavering towards something which is bothering you, then again get into an appreciative rampage. I'm so thankful to you, the sun, because we get heat. I'm so thankful that in winters I like to sit in the sun because I feel so warm. I'm so thankful to you, sun, कि आपसे sunlight vitamin मिलता है, vitamin D. I'm so thankful to you, sun, because you're such a big ball of fire and you bring, happiness and joy when the sun rises in the morning. I'm so grateful to you, sun, because आपकी वजह से पेड़ पौधों में क्लोरोफिल बनता है जिससे वो ग्रीन रहते हैं. I'm so grateful to you, sun, because वो लीव्स में से ऑक्सीजन निकलती है जिसको मैं ब्रीथ करके अलाइव रहती हूँ. I'm so grateful to you, sun, that पूरी ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल किंगडम सब आपकी वजह से है, because and then thank you, sun, for being the perfect balance between the light and the dark. Thank you so much for bringing in so much warmth into our life. Thank you, sun, that for being at a perfect distance. So like this, अगर आपने इतनी देर भी बोला ना, so अब मैंने क्योंकि ये बोला और आपने सुना, हम सबका ऑरा एकदम से बहुत एक्सपैंड हो गया होगा. तो ऐसी चीजें आपको दिन में मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेंगी अगर मैजिक चेक रियलाइज नहीं हो रहा. आज वाला चैप्टर वही है. तो अगर मैजिक चेक रियलाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब है भैया फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत नीचे जा रही है, उस पर वर्क करो, है ना. वर्क हमें सिर्फ अपने पे करना पड़ता है.
और पैसे को और प्यार दो। मे बी पैसे के साथ रिश्ते में अभी भी वरी, एंगर, फियर या वो सब चीजें हैं। पैसे से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। टू मच मनी इज नॉट गुड। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? पैसे को बचा के रखो रेनी डेज के लिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट थे। इसकी वजह से हमारी इतना ज्यादा श्रिंक हो गया है ना प्रायोरिटीज पैसे को लेके, दैट मुश्किल होती है। क्योंकि पैसा को बहुत फ्लोइंग, पैसा का फ्लोइंग नेचर है। जैसे पानी होता है ना, वैसे ही पैसा होता है। वैसे ही तो बहता है वैसे भी, है ना। पानी, पैसे ऐसे ही निकलता है ना। हम एक बार बाहर जाते हैं तो कितने सारे हम खर्चे करते हैं। तो पैसे को बड़ा मजा आता है। आप ये सोचो कि पैसा डांस करते हुए निकलता है हमेशा। तो अगर आपको चाहिए कि पैसा डांस करते हुए आए, तो उसको निकाल के फिर वो खूब सारे दोस्तों को लेके आता है आपकी जिंदगी में। ठीक है। सो इसी तरह से दैट इज आरिगातो इन, आरिगाते आउट। थैंक यू से पैसे निकालो और थैंक यू से पैसे वापस लो। मतलब मिल रहे हैं तब भी थैंक यू, निकल रहे हैं तब भी थैंक यू। अगर 10% भी डिस्काउंट मिल रहा है तो बहुत सारा थैंक यू कह के पैसे लो। तो इस तरह से ये वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारा मैजिक चेक बहुत आराम से रियलाइज होता है। तो हम आज से डिटर्मिनेशन लेते हैं कि हम पूरे दिन ऐसे लव रैम्पेज या थॉटलेसनेस करेंगे, डेलिबरेटली करेंगे, ताकि मैजिक चेक हमारा बहुत जल्दी रियलाइज हो जाए। बिकॉज मनी फ्रीक्वेंसी लिटरली मतलब 550 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होती है। तो अपने आप को हमको उस फ्रीक्वेंसी में रखना बहुत जरूरी होता है। एंड इसीलिए पूरे दिन भर की, देखो सुबह तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, अभी तो हम बहुत अच्छे जोन में रहेंगे। फिर अभी जब सेशन करते हैं उसके 1-1.5 घंटे तक भी हम बहुत अच्छे जोन में रहते हैं। वी आर इन अ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। बट ड्यूरिंग द डे देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन, समवन इरिटेटेड एंड nasty comment giving to us, or we see something and we suddenly become negative about it, say to do with traffic or to do with our domestic helpers. Maybe they do some blunder and we feel very bad about it. So again we have dip, right? सो अगेन वी डिप्ड मीन्स दैट वो सारी मेहनत जो हमारी हो जाती है, जो हम सुबह से दोपहर तक करते हैं, so that actually goes away. So it is very important for us to keep ourselves in a very high frequency throughout the day, and let's work for it जब तक ये हमारी आदत नहीं बन जाए। And keep telling yourself, happiness is my habit now, happiness is my habit now, happiness. I'm always calm, stable and happy. My personality is always calm, stable and happy. I'm calm, stable, happy. I surrender to the universe. Universe is my best friend. I'm learning so much from the books. I really love it. So I know everything is always working out for me. I know that my life is full of magics and miracles. I'm always calm, stable and happy. I'm really calm, stable and happy. My mind is so calm. It is so stable. And I'm always happy because happiness is my habit now. Happiness is my habit now. So when you constantly keep repeating this, you are constantly recreating this, because your subconscious mind absorbs whatever you say. And every cell of your body listens to what you're constantly rampaging about. ओके अब सबकॉन्शियस माइंड में सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, ये सब ऑप्शन तो होता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो, आई मीन इट जस्ट बिलीव्स ऑन व्हाट इज द थिंग विच इज रिपीटेड एंड योर डोमिनेंट थॉट्स एंड योर वर्ड्स, that is what it absorbs. Okay, so let's make full use of the pliability, moldability, the fluidity of the subconscious mind, because it is absorbing everything that you're thinking and saying. So happiness is my habit now. My mind and body is always calm, stable and happy and so healthy. I'm really loving it. I'm so healthy. Every cell of my body works so perfect. I'm amazed. Thank you so much. This is what we have to keep telling ourselves, and everything will start falling into place, you will see. But it has to be a constant chatter, like a mantra. You see, any mantra is not said once. It is always repeated. कि 7 बार बोलो, 11 बार बोलो, 3 बार बोलो, 21 बार बोलो, 5 मिनट बोलो, 108 मंत्रा करो। कहीं पे भी आप देखोगे तो 108 का वैसे ही सिग्निफिकेंस है, 8 + 1 = 9। और कल वाले सेशन में मैं आपको 9 का ऑलरेडी मतलब समझा चुकी हूँ, है ना। सो आप लगातार कोई चीज बोलते हो, मंत्रास ही बोलते हैं ना। हैप्पीनेस इज माय हैबिट नाउ को मंत्रा बना लो। So you will see, and I'm always calm, stable and happy. My body is super healthy. I'm really loving it. It's amazing that how healthy I am. It's amazing. It's so incredible that I just love it. And this is what you has to be a constant chatter. Now you will have to do it multiple times during the day. Okay, not just in the morning. Only then we will be in that high vibrational frequency and energy, जिसकी वजह से आप similar frequency की चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। उसमें से एक आपका मैजिक चेक रियलाइजेशन होता है ना। क्योंकि मनी सिर्फ फ्रीक्वेंसी, मनी सिर्फ एनर्जी है, मनी और कुछ नहीं है। मनी सिर्फ एनर्जी है। मनी की एज सच वैल्यू, मतलब अगर आप इंडियन रुपी लेके जाओगे जिसमें महात्मा गांधी जी बने हुए होते हैं, अगर आप वो लेके न्यूजीलैंड जाओगे
तो वो नहीं चलेगा, तो वो पैसे पैसे के उधर मायने नहीं हुए ना, पैसे के उधर मायने नहीं हुए, वहां पे नहीं चलता है इंडियन रुपी INR। सो फिर मनी का क्या हुआ? सिमिलरली अगर आप कहीं पे जा रहे हो अपना 10 रुपए की स्टेशनरी लेने के लिए, 10 रुपए आपने लिए, वहां पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। छोटी छोटी स्टेशनरीज में इंडिया में क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं होती। अब आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट किसी काम का है नहीं है, है ना? तो इसलिए पैसा सिर्फ एक एनर्जी होता है, और वो आपकी एनर्जी से मैच करना होता है। अगर वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता है तो फिर पैसा कैसे आएगा? अगर आप बार बार पूरे दिन डिप करते रहते हो तो पैसा नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम अपना ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ते हैं, एंड आई एम श्योर दिस टाइम वी आर गोइंग टू रियलाइज आवर मैजिक चेक वेरी फास्ट, एंड डोंट गेट इनटू फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब मत सोचना। इस पचड़ों में अगर आप पड़ गए तो सबकॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है हमारा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रीजन एंड लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन एंड लॉजिक इज द वर्क ऑफ द कॉन्शियस माइंड, नॉट द सबकॉन्शियस माइंड। Okay, because subconscious mind doesn't have reason and logic. It just works on repetition, energy, and images that you hold. That is what is the job of the subconscious mind. और automatically आपकी जो पुरानी negative faulty beliefs हैं about the money, that will go away. That money comes, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ती है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, दैट वे। और मैजिक चेक में हम जो इमेज देख रहे हैं, इसमें एक स्टैम्प है, एक टेलीफोन है, एंड चेक नजर आ रहा है। ठीक है, जो हम आज भरेंगे अपना चेक। सो ऑल दोज ऑफ यू जिनके पास पुराने चेक पड़े हैं, you can just put them, but you have to make a fresh check today. You can just say thank you and dispose them off. और अगर वो रियलाइज नहीं हुआ है, और एक फ्रेश चेक भरो, बिकॉज एक फ्रेश एनर्जी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, संभाल के ऐसे मत रखो पुराने चेक्स, सिक्योरिटी के कारण भी। So this is all the बही खाताs that we can see. We can see an envelope, we can see a check जिसमें खूब सारा gratitude इतना saturated है कि उसके words ही नहीं दिख रहे। तो आप सोचो कि आपको इतना gratitude करना है इस चेक के लिए कि वो उसके words पे भी sparkles आ जाएं gratitude की energy के। See, so high energy on this check that you can't read a single thing here. And there is a telephone signifies number, so you have to write a number on that check of the amount that you want to manifest. What is that amount you really want to realize, for the thing that you want to buy? Suppose you want to buy a phone, you want to buy a course from somewhere, you want to take an annual gym membership, or whatever, you want to buy an outfit which is beyond your budget right now, or you want to buy a pair of shoes or a bag or whatever it is. So a number has to be very, very precise. This is the reason यहाँ पे ये phone बना हुआ है, just to signify that you have to write the amount on the check which should be exact. Okay, because phone में तो obviously हम phone किसी को करेंगे तो exact number पे ही करेंगे ना। मतलब अगर आपको मुझे फोन करना है तो आपको मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा इस पुराने जमाने के फोन पे। किसी और का नंबर डायल करके आप मुझसे नहीं बात कर सकते, है ना? सो दिस इज व्हाट दिस इट सिग्निफाइज द नंबर, और वो स्टैम्प इज देयर जस्ट टू पुट अ स्टैम्प ऑफ ग्रैटिट्यूड, that sign, seal, delivered. Now we have that stamp of gratitude on the check, on the number that you have filled. And then now the real task starts after you have filled the check, is that you have to be constantly positive, affirmative, and in a high vibrational frequency. इस magic check practice की वजह से ही हमारा आधा तो we will change as a being. So let's study this, and Raman is reading for us. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, today is my son's birthday. Oh, Angkat then sending blessings of loads of love, happiness, wonderful health, and a lot of happiness, love, joy in his life, and that he really does well, becomes a beautiful human being. Thank you so much, ma'am. Thank you. Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless some wills it to happen. It's a quote by William S. Burroughs, 1914 to 1997. He is a writer and poet. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created.
eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the Raman, 1 place, second, my screen's gone and I have to just fix it. okay, You can see it, right? ma'am, till condition it's written. That means onwards we have to, like, you have to scroll. Working at it. Galti se something got pressed and It's okay. I'm so sorry about it. Yeah. Now, has it got scrolled? Yes, ma'am. Yeah. Should I read it from the beginning when you direct? Please do that. Okay. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean
that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but if it's not luck at all, it's universal law. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive, and then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe. And you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from the site www.thesecrettv.com.
Magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you feel excited and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as you have really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often, on at least two more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your card or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice number 17, the magic check. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Point number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Point number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though
you were really doing it. Point number 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. Point number 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic check, hold your magic rock in one hand, and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Raman. When you were reading, it looked like as if some bird is singing. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you. So this is about the first quote that was given in this chapter is that um, nothing happens until you wills it to happen. That means that you have to constantly redirect your energy into enjoying the thing and using the thing जो आपने magic check जिसके लिए भरा है, ठीक है, उसमें एनर्जी डालो. क्या चीज चाहिए? पैसे में एनर्जी नहीं डालनी होती है. पैसे से what do you want with that money? Suppose you want an iPhone 16 and it is costing you 1.6 lakhs, then you have to put exactly आप market में जिस भी country में आप रहते हो, because we are all logged in from different countries, so whichever country you're in, वहां पे आप मालूम कर लो कि exactly iPhone 16 कितने का है और exactly आपको वो amount डालना होगा बिना greed के, है ना, exactly वो amount. If it is 1.63 lakhs, it has to be that only. So you put that on that magic check और आपको पता ही है, and then imagine yourself using the phone, not that you've received the money. Okay, इसीलिए हो सकता है magic check अगर realize नहीं होता है, because it is money is the means to an end. It is not the end. Okay, it's a means to an end. So इसीलिए end goal क्या था कि उस पैसे से आपको क्या करना है? You have to imagine and you have to visualize doing that thing that you most wanted by using that money that you had mentioned on the magic check. Magic check पे जो amount लिखा हुआ था, उससे जो आपने चीज खरीदना है, आप उसके बारे में उसको सोचो. अगर आपने वो वेकेशन के लिए क्या था, तो वेकेशन के लिए वो पैसे मतलब आ गए और वो वेकेशन इतनी आराम से आप कर रहे हो और इतना लग्जूरियस वेकेशन है, बिकॉज पता नहीं कहाँ से पैसे आए, बट आ जाते हैं. बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपकी एनर्जी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तो अपने आप मनी स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड, मैग्नेटाइज हो जाता है आपकी तरफ, चुंबक की तरह. सो यू आर धन का चुंबक ऑल द टाइम. इसमें फर्स्ट मतलब 70% ऑफ द चैप्टर में ये लिखा हुआ है दैट पैसे खर्च करने में बहुत ज्यादा संकोच मत करो. अगर आपके पास पैसे हैं, विजडम के साथ आप उसको खर्च करो, है ना. अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो वो आराम से 100 रुपए खर्च कर सकता है ना, या वो 200 भी कर सकता है. तो अब वो लगेगा मेरे पास 1 लाख ही रुपए हैं तो मैं 5,000 खर्च कर दूंगी तो 5,000 कम हो जाएगा. ये वाला जो एटीट्यूड होता है, इसके कारण पैसा हमारे पास नहीं आता, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को ये डोमिनेंट थॉट आपके मन में है दैट पैसे बहुत आराम से नहीं निकलते हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आपके पास पैसे आएंगे नहीं. और पैसे को रुक के रहना पसंद बिल्कुल नहीं है. मनी इज अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल मोबाइल एनर्जी. इट इज अ वेरी मोबाइल एनर्जी. वो टिक के रहेगा ही नहीं. हिंदी में हमने पढ़ा था लक्ष्मी बहुत चंचल होती है. चंचल होती है इसका मतलब ये है दैट इट इज वेरी वेरी it's very volatile. It is always moving and it loves to move. So money loves to move. Money cannot stay in your bank account. Money cannot stay in your credit card. Money cannot stay in your debit card. It will go. It will go if you don't give it a channel to spend. It will find its own channel to go from your life. अगर आप पैसे को निकालते नहीं हो अपनी जिंदगी से, खर्चा नहीं करते हो, तो पैसा आपकी जिंदगी से जाने का रास्ता ढूंढ लेता है. बिकॉज पैसा टिक के नहीं रहेगा, पैसा टिक सकता ही नहीं है. अगर किसी ने बोला है लक्ष्मी चंचल होती है, वो जेन्युइनली इट इज लाइक दैट. इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस. इट इज लाइक दैट रिवर दैट्स कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, कभी इधर से कभी उधर से. तो अब आप पानी को रोक के नहीं रख सकते. अगर इफ देयर इज अ स्ट्रीम विच इज रनिंग और सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है ना, तो उस पत्थर के ऊपर से तो पानी जा नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत टॉल पत्थर है. तो ये पानी दोनों साइड से पत्थर के निकल जाता है. इट विल फाइंड अ वे टू गो. इट विल मेक इट्स ओन ट्रिब्यूटरीज, बट इट विल नॉट गेट स्टैग्नेटेड. स्टैग्नेटेड वाटर इज ऑलवेज स्टिंकिंग वाटर. उसमें पेस्ट, उसमें फ्लाइज, उसमें मस्कीटोज ब्रीड होने लग जाते हैं, काई जम जाती है. स्टार्ट स्टिंकिंग आफ्टर सम टाइम. मनी इज एग्जैक्टली लाइक वाटर. मनी इज वाटर.
It loves flowing. Water का क्या nature है? That it always flows, right? It does not like to stay at one place. It flows. अगर एक bottle में भी आप पानी भर के रख दोगे and you don't drink that bottle of water for several days and months, you will see that you will need to dispose it off after 2 months because there is a smell that starts getting emitted from it. Why? Because पानी को रुक के रहना पसंद नहीं है. पानी जैसे अगर आप रोकने की कोशिश करोगे उसमें ब्रीडिंग शुरू हो जाती है. And you will see a particular kind of a smell and some black kind of an algae thing happening in it. Same thing, money. Money loves being spent. Money loves being celebrated. Money loves being enjoyed. Okay? So do that. Do that in your own wise way as much as you can afford. आराम से जिंदगी जियो. जैसे ही आपको पैसे निकालने का हार्ड बन जाता है ना, आप देखना दूसरे from nowhere you will start receiving the money. और इसमें पहले इसमें ये लिखा हुआ था कि डोंट हैव बरी थॉट्स अबाउट मनी एंड डोंट टॉक नेगेटिव. 10 लोगों को फोन करके कहना मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है ना. आपके पास, यू हैव मैनिफेस्टेड इट. ओके, so this is one thing you need to stop doing is to pick up the phone and talk to 10 people and telling them about your plight of not having enough money, that I don't have this, मेरे ये भी खर्चे हैं, मेरे वो भी खर्चे हैं, मेरे वो भी खर्चे. आप सोचो कि कितनी क्विक मैनिफेस्टेशन कर ली है ना, कितनी फास्ट मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप एनर्जी भी अट्रैक्ट कर रहे हो साथ साथ, है ना. जैसे अगर मैं फोन करूंगी प्रिया को तो मैं बोलूंगी कि प्रिया मेरी हेल्थ ना अभी हील हो रही है और कल मेरा इतना टेम्परेचर था, आज मेरा कम हो गया और मेरा कम होता जा रहा है. एंड यू नो द एंटीबायोटिक्स आर माय मैजिक एलिक्सर. मैं खूब सारा ग्रेटिट्यूड मैंने किया. नाउ आई डिड शेयर विथ हर अबाउट माय हेल्थ, करंट हेल्थ. I did share with, I spoke to Aarti and I told her yesterday that I was not well, and you know, like when Aarti had called up that I'm on antibiotics and this, and I had to come back from office and I'm recovering very fast and this and that. And recovering fast की एनर्जी डाली है ना मैंने, उसमें शेयर भी किया है, while at the same time मैंने ये भी बताया I'm recovering very fast. And see, I'm sitting here in front of you today, no? And yesterday I had to leave office in the morning. I went and I came back home. Okay, so but then this is how you recover. Because I was not crying 10 places and telling this is happening, that's happening, you know, my body is this, that. I don't even want to repeat because वो manifest हो जाती है चीजें. So we don't need to do that. You don't need to tell anybody about the plight that you have because you are a manifestor. If you're not able to create means, please leave this group and go. Seriously. I don't like to have such people in my environment. And I don't want to derive energy because अगर वो इंसान 4 लोगों से बात कर रहा है ना, उनके भी पैसे ब्लॉक हो गए अब. क्योंकि by the power of the subconscious mind, monistic theory कहती है all is one and one is all. Birds of same feather flock together. अगर आप you know उस एनर्जी में रहोगे तो आपके पास पैसा आएगा ही नहीं. आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेहनत करते रहो, पत्थर भी तोड़ के देख लो, nothing will happen because you are in that vibrational frequency in your environment. So it's better to you know like अगर 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में भी लोग नहीं सीख रहे हैं तो it is better immediately move out of that energy field. Otherwise nothing will happen in your life. आपकी जिंदगी में आपको घर खरीदना है ना, आएगा ही नहीं. आप लाख कोशिश कर लो because your law of association is working in your life. You're talking to someone who's constantly in dearth of money and makes you realize it. You know? So there's a constant chatter of, I don't have money, I don't have money. So this is the reason why money is not manifesting. You have to become large-hearted when it comes to money. मैंने आपको I think इतना समझा दिया है और ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है. हम आज की प्रैक्टिस को, बिकॉज आई थिंक सेशन के पहले ही मैंने आपको बता दिया था, और अपने आप को पूरे दिन हाई फ्रीक्वेंसी में रखना. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में रखो. पैसा बहुत सबसे इजी चीज होती है ये वाला कर्मा बदलना. सबसे फाइनेंशियल कर्मा ट्रांसफॉर्म करना इज द इजीएस्ट एंड वेरी सुपरफिशियल. इट्स नॉट वेरी डीप. ओके, रिलेशनशिप कर्मा में हमको थोड़े से डग इन पोल्स को उखाड़ना पड़ता है. यू नो ऐसे ऐसे करके हिला के, पहले मिट्टी हटा के फिर हिला के उस पोल को निकालना पड़ता है. रिलेशनशिप कर्मा में मेहनत बहुत करनी पड़ती है अपने आप पे. बट मनी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी, मतलब आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई कुड ट्रांसफॉर्म इन माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड माय मैजिक बुक जर्नी इन अप्रैल 2020. द फर्स्ट थिंग, एंड इमेजिन ये मैजिक चेक कोविड के टाइम जब सब बंद था तब मैंने मैनिफेस्ट किए थे 2. स्टार्टेड विथ ओनली नई थी तो फर्स्ट चेक मेरा 60,000 का था, तो 60,000 मेरे आ गए थे 13 दिन में. इन 13 days आई गॉट इट. पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा हुआ था उस टाइम. देयर वाज नॉट अ सिंगल कंट्री, यू नो, एटलीस्ट आप इंडिया में तो अपनी बैल्कनी से झांक सकते थे,
बाकी कंट्रीज में तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे उस टाइम, that you could not even step out on the road. So उस टाइम when the money came from nowhere, after that I filled the check 60,000 का रियलाइज हुआ, फिर अगले महीने फिर से मैजिक बुक करी थी, फिर उसमें 2 lakhs भरे थे, 1 lakh भरा था, हाँ 1 lakh फटाफट आ गया, उसके बाद 2 lakhs भरे, वो भी आ गए, और ये सारा मार्च से लेके मतलब अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक हो गया था. सिंस आई डेंट बिलीव, मतलब मैं भी नहीं थी ना मैजिक बुक जर्नी में, सो दिस इज रीजन आई हैड फिल 60,000 रुपीज, बिकॉज मुझे तो उस हिसाब से वो अमाउंट कम लग रहा था, मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी बिलीवेबल टू रिसीव 60,000 एंड इट वॉज जस्ट हैपनिंग. एंड दैट डे एंड टुडे आई नेवर नीडेड टू लुक बैक एट द मनी dearth or think about money when I want to do anything. I mean, like this is how it is. Like yesterday, I booked a very luxurious package to one city, okay, and paid so much money with so much love and gratitude. I can't tell you. And I was like, thank you, universe, for like. So we are going by a normal airfare. I booked the luxurious one. Let me just do it. I thought, let me just do it. है ना, जबकि वो थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड के लिए वो फीलिंग आई थी जो हम सबके मन में आ सकती है, दैट एम आई गोइंग अ लिटिल ओवर बजट, बट दैट्स व्हाट, कम ऑन, मनी विल बी द हैप्पीएस्ट विथ मी टुडे. It will come and it will want to hug me and say that, come on, just go ahead and do it, I'll give you more. It is like that. So this is how beautiful life is. So keep enjoying. Magic check आज हमको भरना है. You can take your magic book, जो normal आपकी वो जो check book होती है, आप उसको use कर लो इसमें. It is not about the technicality और कौन से उसमें आप check भर रहे हो. It is more to do with how much gratitude you are giving. ओके, सो वो अपनी नॉर्मल जो चेकबुक आपकी होती है, प्लीज यूज दैट. उसमें 2 की जगह पे आपको लिखना होगा अपना नाम, whatever your bank account or whatever your name is on your Aadhaar card, on your voter ID card, you have to write that name, पूरा नाम अपना. And then amount में आपको कौन सी चीज आपको उस पैसे से लेनी है. वन थिंग, फॉर वन थिंग वी टेक इट. सपोज आपको अपनी किसी ट्रिप पे जाना है, आपको जाना है इंडोनेशिया की ट्रिप पे, तो इंडोनेशिया की ट्रिप में आप पूरा वो उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स इसीलिए थे, जस्ट कैलकुलेट दैट व्हाट मनी, वीजा के इतने पैसे लगेंगे, 2,500 लगते हैं, फिर उसके इतने लगेंगे, होटल का एक्सपेंस इतना है, फ्लाइट का इतना है, लोकल साइट सीइंग का इतना हो रहा है, कैबीज को इतना देना है, यू विल बी ईटिंग एट डिफरेंट पब्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, तो वहां का इतना होगा, इसका फिर जो कुछ शॉपिंग करनी है इतनी है, तो कुल मिला के द मनी इज कमिंग आउट टू बी 5,200,000, है ना, सपोज. सो यू हैव टू फिल इन 5,200,000. That is how it is. So you have to put the exact amount of what it is that you want. थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो, because expenses थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, little bit extra, है ना, by say 10,000 rupees or 20,000 rupees, इतना आप एक्स्ट्रा डाल लो, और वो मैजिक चेक पे वो अमाउंट लिख दो. पीछे आप उस पे लिख दो that for what have you, like for what have you filled the magic check. Behind the check always write that, okay, like for your Indonesia trip with family or whatever it is. And then नीचे जहाँ पे साइन करते हैं, न्यूमेरिक्स ऑफ कोर्स वर्ड से अलाइंड होने चाहिए, जो वर्ड में आपने फिगर लिखी है वही न्यूमेरिक्स में भी लिखना. एंड फिर नीचे लिखना है फ्रॉम द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स. जहाँ पे आप नॉर्मली हम अपने साइन करते हैं ना, वहाँ पे यूनिवर्स के साइन आपको करने होंगे. Gratitude Bank of Universe. And what I also do is I write thank you in capital 3 times on top of it. This I have derived from the vision board that in chapter number 13 जो हमने पढ़ा था, उसमें रौंडा ने बोला था विजन बोर्ड की शुरुआत ही 3 थैंक यू से होनी चाहिए, जो ऊपर आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है. विजन बोर्ड ऐसे बनता है. विजन बोर्ड से पिक्चर्स नहीं होती, 3 थैंक यू ऊपर करना जरूरी है. उसी तक वहां से डेरिवेशन मैंने लिया है. एंड आई हैव स्टार्टेड पुटिंग 3 थैंक यूज ऑन टॉप ऑफ माय मैजिक चेक, एंड देन आई फिल, एंड पीछे आई राइट दैट अमाउंट, एंड आई राइट एन एफर्मेशन विद दैट, that thank you universe for delivering this particular thing to me, or making my trip so enjoyable, successful and outright magical, or whatever. अगर मुझे फोन चाहिए उससे, so I would write that thank you universe for giving me the phone that I really so wanted, and I love it as if it's already happened. So इस चेक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा. और फिर इस पर्टिकुलर चेक को लेके आपको जब अब उस चीज के बारे में विजन करना है, ये नहीं कि पैसा आ गया, बैंक क्रेडिट हो गया, ये हम पैसे के बारे में नहीं सोचते. पैसा हमने मीन्स टू एन एंड किया है ना. सो यू हैव टू विजुअलाइज द एंड, नॉट द मीन्स. Okay, you have to visualize the end, because you never know. हो सकता है कि वो पैसा नहीं आए बट आपको गिफ्ट में वो मिल जाए.
You never know that somebody might give you iPhone 16, or you want a certain bag or something, somebody might just give you that bag, as a gift. So you don't know how that thing comes into your life. You will get that. That is a guarantee. Stamp. Okay, that's a stamp paper thing. So that is guaranteed that you're going to get that particular thing. So it may not be just, you know, like Rita ji ने share किया था. Rita ji, आज आपके बहुत सारे मैं example दे रही हूँ. So she wanted an iPad for herself. Okay. And she went to her sister-in-law's or someone's place in Bangkok. And, the sister-in-law said that I've got an iPad and it was new and then she got it from there. So she didn't get the money, but she got her iPad, no? Similarly, so Jayashree had shared about her Samsung phone. She wanted a very expensive phone that was for 1 lakh rupees something because Jay loves traveling so much and she wanted really nice pictures. So that particular Samsung phone, which was slim or whatever, like specifications, took very good pictures. It was known for its extraordinary camera. So she wanted that phone, but then at that point of time, she wanted to manifest money for it. So her brother-in-law, who lives in Doha, Qatar, yeah. So from Doha, brother-in-law and sister, she's got one sister. So sister and brother-in-law, they sent her that phone through someone who was traveling to India. And the phone came here. She did not get the money, but she got exactly the same phone. And she did not even discuss with them that she wanted that. She did not discuss with them. उसने नहीं बताया था उनको कि उसको वो वाला phone चाहिए. See how universe plays up, how universe orchestrates. है ना, अपने आप ही चीजें होती हैं. तो कई बार आपको पैसा नहीं मिलेगा, but you will get that thing from somewhere. Or you will get that thing on a 70% off. Out of the blue, somebody might come and say, suppose you want a car and your down payment. Now, a friend of yours, like we had studied in the power book, that वो कैडिला के बारे में, कैडिला के बारे में तो सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग में पढ़ा था. तो इस पर्सन को कैडिला चाहिए, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, दैट दिस गर्ल वांटेड कैडिला. नाउ शी वाज सिंगल, इसके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी थी. She was single, she was earning as a clerk in a bank, and she wanted that car, Cadillac, red color, whatever. And she didn't know how to get it, So she just imagined and she was visualizing and all that. And then someone tells her ancestors, iske koi cousin the, who were moving, relocating abroad, and they asked her that we own a Cadillac and would you want to, like keep it for yourself and we can just gift it to you. And with that, they also gave her a lot of plots of lands that her father had left. It was some ancestral something, and she got that. So universe gives you 1 plus, always plus 1. Plus 1, plus 2 ke saath sab kuch aata hai. And that is how it was, So this is a beautiful experience that we've studied, and there are multiple studies that we have seen that how you ask for it and how beautifully, mystically, magically, in a very miraculous way, you get that thing in your life very, very easily. है ना? तो इस तरह से उस चीज पे एनर्जी फोकस करो जो आपको चाहिए. पैसे पे एनर्जी नहीं फोकस करनी है. पैसे पे करोगे तो चेक रियलाइज नहीं होगा. ये चीज मैं बार बार समझाती हूँ. रोंडा बर्न ने अब मनी वाले चैप्टर में बोला था, बेटी जी ने कितनी बार, 2-3 बार शायद पोस्ट कर दिया है, दैट डोंट मेक मनी द गॉड. मनी लव्स बीइंग सेलिब्रेटेड. मनी इज जस्ट एनर्जी. इट सेज गो आउट देयर, एंजॉय योर लाइफ, बाय ऑल द थिंग्स दैट यू वांटेड टू बाय. Okay, so money says that. So don't make money the god. नहीं तो अटैचमेंट हो जाएगी पैसे से. अटैचमेंट होगी तो ग्रीड होता है. ग्रीड होता है तो पैसे निकलेंगे नहीं. पैसे निकलेंगे नहीं तो अब आपको पैसे आने बंद हो जाएंगे. बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी इज ऑलवेज सर्क्यूलेटिंग. सर्क्यूलेटिंग का मतलब होता है जाएगा तो आएगा. ठीक है. सो मनी ऑलवेज सर्क्यूलेट्स. मनी सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है. मनी स्टैग्नेटेड सिस्टम नहीं होता है. इसीलिए डोंट मेक मनी गॉड, बिकॉज अपने आप अटैचमेंट हो जाएगी. फिर उससे अटैचमेंट पैसे के साथ होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है. फिर वो रिलीज नहीं होता है बहुत आराम से. ठीक है. तो हर चीज के लिए मैनिफेस्ट करना सीखो. मतलब हर चीज के लिए, कोई भी चीज आपको करनी है, मैनिफेस्ट मनी फॉर इट. दैट इज द होल आइडिया ऑफ ऑल ऑफ अस वेकिंग इन द मॉर्निंग. और बाकी मैंने आपको शुरू में 6 बजे से 6:15 बजे तक बहुत सारा समझाया है. उन सब रूल्स को अप्लाई करना. ठीक है. तो आज ये चेक हमने भर लिया. We have visualized that thing in the morning. लिखते लिखते आपने लिखा, फिर आपने विजुलाइज किया कि आप वो चीज वो आपके पास आ गई है और आप कितने खुश हो बाय यूजिंग इट, बिकॉज यू रियली वांटेड इट. एंड एवरीबडी सेइंग शो मी योर फोन, शो मी योर फोन, इट्स सो नाइस, वाओ इन पिक्चर्स कितनी अच्छी आती है, दिस दैट और व्हाटएवर इट इज फॉर दैट मैटर. और वो है हॉलीडे जिसके लिए आपने मैजिक चेक भरा था, यू एंजॉइंग दैट. या डाउन पेमेंट आपको करनी थी घर की, तो फाइनली आपको पेपर्स मिल गए हैं घर के और आप कितने खुश हो. यू सेलिब्रेटिंग, यू गॉन आउट फॉर योर डिनर विथ योर फैमिली एंड you're enjoying so much,
much, and your parents, your in-laws are all congratulating you that congrats, this is what had happened, and that's what it, matlab jo bhi hai in a celebratory, that is what you have to visualize and say thank you to the check multiple times during the day. Rhonda Bane bola at least 2 more times during the day. Take out your magic check today and say thank you, using the thing that you wanted to create with that magic check as if it's already yours. 2 बार और at least 2 बार और लिखा है, which means multiple times during the day you can do it. And keep this magic check. I always keep it in the purse. Anytime I open it and I say thank you for that particular thing, I say thank you not for the money. I say thank you for that thing that I had filled in the magic check for. So उस चीज के लिए आप thank you बोलो, and you will see that you will magnetize that thing. और but अपने आप को पूरे दिन high frequency में रखना होता है. Please meditate if you're not already doing it, even if it is for one minute, 3 times in a day. Your life will change with that. Your life will change. The fastest way to have a very happening, happy, healthy, prosperous, wealthy, harmonious life is meditating or getting into that pockets of thoughtlessness and silence several times in a day, because आपकी आत्मा परमात्मा से तभी connect होती है. Your soul connects to the super soul, and super soul is ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर funnel up होके आती हैं. Because जैसे ही आप thoughtlessness zone में जाते हो, you are actually funneling up all the powerful energies of the whole universe. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जिनको देवी देवताएं, सन मून, जिनके पास जो पावर है वो आपकी जिंदगी में अगर आपको फनल अप करना है, एंड यू वांट टू बिकम अ पावरफुल मैनिफेस्टर एंड अ क्रिएटर, इट इज ओनली डन थ्रू गेटिंग इनटू दैट साइलेंस मोड. बिकॉज व्हेन द कॉन्शियस माइंड इज शट डाउन, कॉन्शियस माइंड हमको कनेक्ट नहीं होने देता है, क्योंकि वो बहुत रीजन, लॉजिकल एनालिसिस ये सब होता रहता है ना. और फिर परसेप्शन, आंखें खुली है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो सुन रहे हो, ये सुन रहे हो. सो उन सब से हमको कभी कभी इरिटेशन होती है. इनफैक्ट हम लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं. बट डजंट मैटर, अगर आपने दिन में 3 बार भी 1 मिनट के लिए किया, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट यू हैव बिकम अ पावरफुल मैनिफेस्टर एंड यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ पॉजिटिव पर्सन. Because Atma and Paramatma, they don't let you fall down in life because they are energies. Okay, so you might fall down for a second, but you will see that you will not take even 5 minutes to come back to your original happy this thing, because happiness is your habit now. And you made it a habit. We cultivate our beings. We are not beings. Okay, we cultivate it, nurture it, polish it, work at it at keeping you happy and enjoying life. Start celebrating little things in your life. Start celebrating that hot cup of tea in the morning. Start celebrating that great nature walk that you have every day. Start celebrating the chirping of the bird. Start celebrating the rising of the sun. Start celebrating the sunset time. Start celebrating so many people around you. Start celebrating the tall trees, short trees. Start celebrating going in the car very smoothly, sitting in the car in luxury. Start celebrating a good night's sleep. Start celebrating that food that is there in front of you. Start celebrating a conversation on the phone. Start celebrating the voice of other people around you. Start celebrating living in your house. Start celebrating that, wow, beautiful wake up in the morning. Only then your life is going to be cherishing and you will love every moment of it. That is who you need to be, because life is a celebration. So even if you just go for a morning walk and you're sitting on your sofa, I'm sitting on my yellow colored sofa, it is, I'm celebrating this moment to the hilt. This is a celebration that I can sit. It's an absolute miracle. There are so many people right now in the hospital lying down. They're not able to sit. Okay, they don't have a living room, sofa, they're not even home. ये बहुत बड़ी चीजें होती है जो हम realize नहीं करते. ठीक है? So start celebrating every breath. Celebrate every breath. Every breath means you're saying thank you to your life, because life is prana. If you start celebrating your prana, that is your every breath, you will see that life will have so much more to offer to you, that you will, you'll feel that, oh my God, like, that aha moments, and life will be full of those aha moments. That is how it is. Those epiphanies that will keep happening. And more you celebrate them, more life will have to offer to you by the law of attraction. Energy attracts energy, like attracts like. You will become that magnet to all those situations that happen. Okay, तो आज अच्छी से मैजिक चेक करो, और हैक यही है that अपने आप को पूरे दिन हैप्पी रखो and celebrate every moment of your life. है ना? Do little things. You can take yourself out for a coffee. आप अपने आप को डेट पे लेके जाओ, है ना? अपने आप को ही डेट पे नहीं ले जा सकते तो और क्यों, और कौन ले जाएगा? मतलब
If you don't enjoy your own company on a date, why will anyone enjoy your company on a date? No. So we have to start loving ourselves and enjoying our own company. So आज सुबह मैजिक चेक अभी अभी भरना है. आज की प्रैक्टिस है ये, अभी की प्रैक्टिस है. अभी जैसे ही सेशन खत्म होगा, आप सोचो व्हाट इज दैट थिंग दैट यू मोस्ट वांट, अपना मैजिक चेक भरो और उसको विजुलाइज करो, वो वाली चीज, यूजिंग दैट चीज जिसके लिए आपने भरा था. और फिर उसके बाद दिन में 2 बार और मिनिमम दिन में 2 बार और, यू कैन डू इट इवन 100 times in a day today, that's not a problem, but 2 times more during the day you have to say thank you for that thing that you have received, and say thank you and I love you to your check multiple times during the day for that thing, to your check, not to the money, for that thing that you had filled in the check for. Okay, जिस चीज के लिए आपने पैसे भरे थे उसको आप दिल से थैंक यू बोलो, आप देखना कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऐसे आबराकडाबरा. And ma'am, we have to pray for Mr. Ratan Tata ji today. Okay, all right, yeah, he's a wonderful person. And I think he's struggling, or I think he's no more, Updated about something his like this. health. Yeah, I'm yet to be updated about his health, but okay, we'll definitely pray lots of blessings for his happy, joyful life and healthy body. Every He cell has of passed away. No, He Dipti, has he passed passed away, away. ma'am, Dipti, night. Hanji, yesterday He night passed he away was. yesterday night. I don't have any idea. Okay, okay, he He's passed no away. more. He Yeah. will be quickly reborn in a very, very happy family as a very big saint who will transform the world. I think he is a beautiful soul. Soul is always there, no? He is a beautiful soul. मुझे नहीं, कैसे नहीं पता. Okay, so Ma'am. count my blessings in the morning. We have done it, and Magic Rock practice continues diligently, failing which our lives cannot change. And of course, what we need to do is fill in the magic check, take it out twice during the day. एक बार सुबह हो गया, 2 बार और, total 3. 3 is the number of creation. So we have to say thank you to the thing that we had filled in the magic check for, and keep this magic check somewhere very, very in the vicinity so that you get to see it often and you pick it up and you give massive thanks for it. Massive thanks for the thing that you had filled this for. So that is what we have. Now we go to the other book, Breaking the Habit. हमारा time overshoot हो गया, but sorry, but we have to do this paragraph today. Being transparent, going from the inner to the outer. Yes, Aarti Gupta, please read it for us. Guys, we won't be taking any sharings today. म्यूट हो आरती आप. आरती पढ़ रही है ना आज? Good morning, ma'am. Good morning. Being transparent, going from the inner to the outer. When you are transparent, how you appear is who you are, and your internal thoughts and feelings are reflected in your external environment. Having achieved this state, your life and your mind are synonymous. It is your final relationship between you and all of your outward creations. This means that your life reflects your mind in all arenas. You are your life, and your life is a reflection of you. If, as quantum physics suggests, the environment is an extension of the mind, this is when your life reorganizes itself to reflect your new mind. Transparency is a state of true empowerment in which you have realized, made real, your dream of personal transformation. You have gained wisdom from experience and are greater than the environment and your past reality. The telltale sign of becoming transparent is that you do not have many overly analytical or critical thoughts. You wouldn't want to think that way. It would take you away from your present state. Since the side effect of transparency is true joy, more energy, and freedom of expression, any thought that is connected to an ego drive would lower the elevated feeling within you. There will come a moment when your life begins to unfold with new and wonderful events. There will come a moment that you will be in awe, wonder, and utter wakefulness when you realize it was your mind that created them. In your rapture, you will look back
from this vantage point to your entire life, and you will not want to change anything. You will not regret any action or feel bad about whatever has happened to you, because in that moment of your manifestation, it will all make sense to you. You will see how your past got to you to this great state. As a result of your efforts, the consciousness of the greater mind has begun to be your conscious mind. Its nature is becoming your nature. You naturally become more divine. This is who you really are. This is your natural state of being. Yeah, thank you, Aarti. We'll be reading only so much today. Thank you so much for reading. Thank you. Thank you. So this is when you all were telling me about Mr. Ratan Tata. See, this is who I am. So from yesterday evening, I've been on a shutdown mode only. You know, I don't get into news in our house. We don't talk. I mean, I would get to know once the day breaks and everything. I get into the world. But this is how it is life. There's been no information in my head. I keep myself very, very, like in my own space from night till morning, early morning when I wake up till about 8:30 when I gym and I come back. And then the world starts coming into me. So मुझे इस तरह पता लगता है. There's been no news. हमारे घर में कोई हमारे घर टीवी है. Nice smart TVs, but they don't have connections. we don't connect it. We don't have all those things. I mean, we do have Netflix on our individual and on that television. Once in a while we watch some Christmas movies or something. Otherwise, we don't have any news. We do have newspaper. My husband's an avid reader of newspaper. He takes an hour to read it. So he does. But yeah, this is what it is. But as far as Mr. Ratan Tata is concerned, I think, one of the biggest fans of him. And he is like, उन्होंने अपना उनकी soul ने इस जन्म में अपना काम पूरा कर लिया था. He's built an empire. He's a brand. Every airline, every time when I'm sitting in Air India or Vistara, I always remember Mr. Ratan Tata. Every time when I stay at Taj Hotel, I remember him about the kind of impact. You can see his spirit in every staff when you stay at Taj Hotel. They are impeccable, meticulous. This is the world he has created. So we do remember him for the world he has created. So he's done his job. He's built his empire. He's given employment to so many people. He's sustained lives. He's handed over them all the things that, like whatever he knew, his skills. Although unke replica to nahi ho sakte, but unhone kafi, like prototypes produce kiye hain apne jaise. And I'm sure he's up there in the heaven, a happy man, looking at this earth and saying that, oh, I've done my job and I've done it bloody well and the best I could do. And so a lot of homage and respect and love light to him for his quick rebirth. To build another very good empire. अब जो next सबसे बड़ी company होगी ना अगले कुछ 20-25 सालों में, जब तक वो adult नहीं हो जाएंगे, वो मिस्टर रतन टाटा का reincarnation के through होंगे. So yeah, I'm sure he's listening now that he's supernatural that way. Okay, so about this particular topic, Dr. Joe Dispenza says, be authentic, don't be fake, be very who you are. You don't need to make up matlab artificial behavior, exercise nahi karna hai of who you are. If you're not comfortable doing something, don't do it. But if you know it is for good, then do it. Okay, that is what it is. Authentic self hamara hai life word, happiness, love, joy, serenity, calmness, gratitude, loving people irrespective of who they are, blessing people, forgiving, enjoying, laughing, spiritually growing. All these things are the job of a soul, right? This is how the soul is serving us. So that is the this is called being connected to ourselves. That means I'm connected to my inner source of joy, love, well-being, peace, happiness, serenity, calmness, empowerment. So Dr. Joe Dispenza ने यहाँ पे एक word में बोला है जो मैंने अभी highlight किया था, that empowerment is authentic, being authentic. The moment you're authentic, the moment you are you will see that there is a sense of power that comes in you, right? And we are not meant to be fidgeting, crankiness, irritated, blaming, complaining. We are not meant to be that.
unforgiving. We are not unforgiving. Yes, we might take time to forgive someone. That's okay. But we are making attempts to do it, no? That way. And just keep growing and make happiness your habit and keep telling your subconscious mind, talking to your subconscious mind. Talk to the sun, you can talk to the trees. You want to share something, you want to share about your dreams, talk to the sun or talk to the trees, talk to the grass. You can do. That's nature. That's God. There's God in every particle of a tree, every leaf. There is God in the sun. There is God in the whole, all the planetary system, the stars, the earth, the stone. There's God in that stone, and it allows us to step on it and go. So you can talk, that's God, that's universe. So you will see that now you will have a certain sense of empowerment in you. And you will see the difference of that in your outer reality, and you'll see life changing so fast. So इसमें लिखा हुआ है that word, no, you naturally become more divine, because divinity is your natural state of being, isn't it? Divinity, you are a divine being. It's just that we get inundated by these external circumstances so fast, but mentally हम बहुत ज़्यादा, है ना, हमारा जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है जो क्रिएशन के लिए होता है, उसमें खूब अच्छी अच्छी फीडिंग आ रही है, उसमें खूब अच्छी अच्छी पिक्चरें डाउनलोड हो रही है ऑफ लव, जॉय, ब्लिस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग पीपल. तो सोचो वो नियोकॉर्टेक्स का साइज बड़ा होता जाएगा और एमिगडाला का साइज छोटा होता जाएगा, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो ट्रिगर करता है नेगेटिव हॉर्मोन्स निकालो, नेगेटिव वो पता नहीं फियर वाली लेके बैठा हुआ है, उसका साइज श्रिंक होता जाएगा और नियोकॉर्टेक्स का साइज बड़ा होता जाएगा. क्यों एलियंस के हेड इतने बड़े होते हैं? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बॉडी छोटी होती है. आपने देखे होंगे ना एलियंस के फोटो, हेड बहुत बड़े होते हैं. तो हमारा भी नियोकॉर्टेक्स एक्चुअली इसका साइज एवोल्यूशन के हिसाब से बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज मैन इज मेंट टू बी क्रिएट. और जितना ज्यादा स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं, उतनी ज्यादा हमारा पावर टू क्रिएट भी बढ़ता जा रहा है ना. सो क्रिएट योर लाइफ योर ओन वे, एंड दिस इज ऑल वी हैव इन टुडेज स्टडी. एंड सिंस इट्स अ वर्क डे, we'll take your sharings tomorrow. I hope we are all getting good insights out of learning so much, such amazing books, and it's absolutely wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you Really. so much, Thank you. everyone. Thanks a lot for these lovely sessions, Feeling your magic everyone. check right away, guys. The magic check right away. Think of that thing. And randomly ऐसे practice करने को करना है नहीं. आप सोचो genuinely कि आपको कौन सी चीज चाहिए, उसके पैसे करो. पैसे होंगे आपके पास ऑलरेडी उसके लिए. But नहीं create- नहीं नहीं ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਪਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ Raman, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ बहुत मेहर ਹਾਂਜੀ दीप्ति मुझे कहाँ से मिलेगा मैजिक चेक यहाँ? डाउनलोड कोई ग्रुप में भेज देगा, आप उसकी जेरोक्स करा लीजिए. जेरोक्स के बाहर बाहर मैं किसको बोलूँ जेरोक्स कराने? नॉट इन जयपुर. अच्छा, तो जाके भर लीजिएगा. Sarita di, what I अच्छा, did thank last you. time ना, last time I was outside, मैंने A4 पेपर पे लेके खुद से बना लिया था. A4 Oh, पेपर We can draw also. हाथ से बना लो. Draw Yeah, कर that's ली. what I आई did क्या? it last time. फोटो कोई Okay. पोस्ट कर देना, तो फिर वो जो हमारी पुरानी जो मैजिक चेक की रोंडा बर्न वाले उसमें से जो फोटो है उसमें देख के, सरिता जी आप जैसे उसमें मैजिक चेक डालोगे ना गूगल पे जाके, तो तो आपके आ जाएगा. हाँ 100 मैजिक चेक आ जाएंगे. उसमें से एक का रेप्लिका, उसमें बस लाइनें खींचनी होती है और वो इटैलिक्स में आप लिख देना पे टू एंड रुपीज. अच्छा, आई कैन मेक बाय हैंड ना? कर लीजिए आप. थैंक यू. आई It's गया मैं about तो. gratitude, not about technicality. So I'm sure आपका तो बहुत फटाफट होगा. रिलायंस. थैंक यू सो मच दीप्ति. Thank you लव so यू. much. Thank you. Ma'am, I have a Ma'am, question. thank you so much. Thank you, everyone. Ma'am, I have a question Yeah. regarding this thing. Ma'am, एक ही चीज के जैसे Thank you, बार ma'am. बार बना सकते हैं चेक? एक ही चीज का मतलब, एक पर्टिकुलर आइटम सपोज फोन है आपको चाहिए. हाँ हाँ लास्ट मंथ बनाया था तो इस बार भी बनाना चाहिए या हाँ, लास्ट मंथ आप फ्रेश एनर्जी डालो उसमें, बिकॉज हो सकता है उस चेक में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आप नहीं डाल पाए हो, बिकॉज यू वर ऑक्यूपाइड विद योर हाउस और सम अदर चोर्स ऑफ द हाउस. So just tear it off and throw it and make a fresh check with fresh energy and keep yourself upbeat and in high energy throughout. And especially when you're holding the check, you have to be in a very, very good, multiple times during the day say thank you and I love you.
Yes, ma'am. Thank and you. visualize the thing. Yeah. All right. Thank you. Ma'am, there's one small sharing. Can I do related to the chapter with one of the YouTuber who told me to share it with you? Okay. Yeah. So Pooja Wag from Nasik, she wanted to share as she can't make video and can't join live. So she calls me to share. And वो मनी को लेके वो 108 कॉइन लेती हैं और 108 कॉइन्स के साथ वो 108 होपोनोपो करती हैं और जब भी वो ये करती हैं तो उनका पास अबंडेंस ऑफ मनी आता है, बहुत एकदम फ्लो में आता है. एंड लव रैम्पेज और थॉटलेसनेस, ये मेडिटेशन जो भी आप बता रहे हैं वो प्रॉपर फॉलो कर रही हैं और उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो गया है और वो लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लॉरिश कर रही है. सो शी जस्ट वांटेड टू से अ डीप हार्ट ऑफ थैंक्स टू यू. सो फ्रॉम हर साइड एंड फ्रॉम माय साइड आल्सो थैंक यू सो मच. एंड शी जस्ट वांटेड कि मैं ये आपसे शेयर करूं कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू. And she said that Ho'oponopo works a lot and she does it with coins to get that abundance feeling. Yeah, but you can do it with the currency also of your country. It's not necessary that with coins, but so wonderful, Pooja. I feel so proud of you today that you've Pooja transformed your life. Pooja naam hai na? Pooja Wag from Nashik. Pooja Bag. So thank you, Pooja, for sharing this through Bharti, and thank you, Bharti, for being an angel in so many lives. And thank you so much for Pooja for transforming your life. And we would love if you can't join the session, you can obviously make a video and you can share with us of like 1 minute में that आप कब से magics and miracles के साथ जुड़े हुए हो, and what are the changes that you have seen and what are the practices, basis which practices. And I'm sure that people are going to get encouraged, and we'll post that on our Instagram handle so that other people can also benefit from the practices that you do. And relationships अच्छे हो गए spouse के साथ. There are many people who are struggling with having a good relationship, but कुछ चीजें personal होती है तो आप अपने आप देख लो कि किस तरह से you can share it with us. So thank you so much and God bless you with more amazing relationships, more abundance of money and great health and a lot of love, joy, happiness and harmony in your life. So thank you, and thank you, Bharti, again. Bye-bye. Thank you, Dipti. Thank Thank you so you. much. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Pooja. you. Thank you. Yawn the Thank you way, so much. like all Bye. arms Thank and you, legs and everyone. everything is Thank you, vibrating ma'am. at frequency. Yeah. Thank you so Thank you, much. ma'am. You Thank are a you. bundle of energy in your own way, like Thank you, ma'am. the Thank you, ma'am.